Assalamualaikum dear students. Welcome in engineering drawing and graphics. It's our practical lecture. Last time we practiced the operation sheet number 1 of single stroke capital vertical lettering on graph sheet. And today we learn and practice the operation sheet number 2 or practical number 2, which is single stroke capital inclined lettering on a graph sheet. Last time we talked about the vertical lettering, and today we practice the inclined lettering. Dear students, have you remembered the difference between vertical lettering and inclined lettering? So let me repeat the basic difference or structure in a vertical and inclined lettering. As you've seen here, that lettering is called the vertical lettering. As we practiced last time, the letters are in a straight position perpendicular to the ground, and here you can see that lettering and that alphabets are in a inclined single stroke lettering. The alphabets are in inclination, and that inclination is 67.5 degree. डियर स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर में जैसे कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही थी लास्ट टाइम, तो हम इंग्लिश के साथ साथ उसको थोड़ा सा उर्दू में भी आपको ब्रीफ करेंगे। जैसा कि लास्ट टाइम हमने सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटरिंग के अंदर वर्टिकल लेटरिंग की थी, और वर्टिकल लेटरिंग क्या होती है कि वर्टिकल लेटरिंग के अंदर ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये स्ट्रेट लिखे जाते हैं, जबकि इंक्लाइन के अंदर हम इनको तिरछा लिखेंगे। और ये जो हमने इसका तिरछापन रखना है ये होगा 67.5 डिग्री, जो है वो हम इसके अंदर तिरछापन रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास शीट है सिंगल स्ट्रोक कैपिटल इंक्लाइन लेटरिंग ऑन ग्राफ शीट, ये क्या है और हम इसको किस तरह से ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ लेटरिंग। लेटरिंग को किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था। आज हम फिर इसको रिपीट करेंगे कि लेटरिंग क्या है और लेटरिंग को किस तरह से बयान किया जाता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशनल डेटा सच एज टाइटल्स, डायमेंशंस, नोट्स, सरफेस फिनिश एट्सेट्रा ऑन अ ड्राइंग इज़ नाउन एज लेटरिंग। व्हाट इज़ लेटरिंग? लेटरिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम मालूमात, जैसा कि किसी भी सब्जेक्ट का टाइटल क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, उसके ऊपर दर्ज जो मालूमात हैं, जो उसकी पैमाइशें हैं, उसके नोट्स हैं, उसकी सरफेस फिनिश है, इस तमाम डेटा को, इस तमाम इंफॉर्मेशन को किसी भी ड्राइंग शीट के ऊपर दर्ज करने का, ज़ाहिर करने का जो अमल होगा, ऑपरेशन होगा, उसे लेटरिंग का नाम दिया जाएगा। Okay, dear students, we talk about the lettering, and now we talk about what is single stroke and inclined. Single stroke, what is single stroke? Last time we talked about that. When you start a lettering, like here I'm starting a lettering, I start a letter to write alphabet A. I start alphabet and I lift the pencil after completion, after completing that alphabet. So here the definition of that is inclined single stroke lettering is to be drawn at 67.5 degree, 67.5 degree, and that inclination is called inclined. And the next sentence part is defining the single stroke without lifting the pencil. डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटरिंग के अंदर अल्फाज का जो तिरछापन होता है वो 67.5 डिग्री होगा, और हम पेंसिल को उठाए बगैर किसी भी अल्फ़ाबेट को लिखेंगे। तो जब हम पेंसिल को उठाए बगैर किसी भी अल्फ़ाबेट को राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो इसको कहा जाता है सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। तो हमारा आज का जो प्रैक्टिकल है, जो ऑपरेशन शीट है, वो है सिंगल स्ट्रोक कैपिटल इंक्लाइंड लेटरिंग ऑन अ ग्राफ शीट। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन से
जो स्टेप्स हैं और उनको हमने किस तरह से फॉलो करके ये लेटरिंग करनी है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेटरिंग आपने करनी है ये आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है ग्राफ पेपर के ऊपर, जैसा प्रैक्टिकल नंबर 1 में आपको कराया गया था। और उस ग्राफ शीट के ऊपर आपने ये अल्फ़ाबेट्स लिख के उसको मुकम्मल करके फिर आपने अपने इंस्ट्रक्टर को सबमिट करवा देनी है। डियर स्टूडेंट्स, here the materials, what materials you required for that operation sheet number 2. First one is a graph sheet of light color print. As I show you that is a graph paper, and we use that graph paper for a lettering purpose. Next one is H pencil. Okay, that for lettering we prefer to use the H pencil, and that is a H pencil. Here you look at the position here written out that a H pencil. So we use the H pencil for operation sheet number 2. The next one is eraser or any rubber that you use for erasing. Next one is and drying tape. Drying tape is used for fixing the graph paper on a table, and that is a graph sheet or transparent sheet, which is used to fix the graph paper or graph sheet on a table for better drawing. These students, now we move on a graph paper. Listen it carefully and understand what I'm saying. First, I'm saying that single stroke inclined lettering. We talk about it. Single stroke means without lifting the pencil. Inclination means we draw that alphabets at an angle of 67.5 degree. And lettering means informational data that is used on a drawings. Now these students, what we write down the alphabets, what alphabets we write down? We write down the A to Z alphabets as we practiced in practical number 1. We practice in now in practical number 2 also, that we write down the alphabets A to Z. All alphabets like here, that is a graph paper. And last time we practiced it that we use that alphabets, one square is used for one alphabet, that is one square. Here you see that this is a one square, first square of that all. We write down the alphabet A here, then alphabet B, then alphabet C, D, E, F, G, etc, etc. A to Z we write down all the alphabets here. And now we talk about the alphabets, how we write down that. Last time we practiced 6 by 6. Here we also use that 6 by 6. Height of alphabet should be 6 squares, and we use the ratio of 6 by 6. What it's meaning that here, look out that graph paper, and I will instruct you on here. On a graph paper, it's similar to graph paper. I draw it for better understanding. Look at the position on a graph paper. If you count down that there are 1, 2, 3, 4, 10 squares in horizontal position. Similarly, 10 small squares on a vertical position. That one big square holding that 10 by 10 small squares. And we use and we talk about that. We here state that we use 6 by 6 ratio. We use 6 by 6 squares. So we left out 2 squares from here, 2 from here, 2 from each side. So here you will see that in the center we use 6 by 6. Height of 6 squares 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Similarly, the width of 6 squares 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in lettering I say that it's a width of alphabet, and here that 6 which I am instructing is called the height of any alphabet. So as we write down the alphabet here, what should be the height and what should be the width of that square. Dear students, अभी जो हमने बात की, हमने कहा
कि हम जो है वो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग करने जा रहे हैं और ये हमने करनी है 6x6 के अंदर, यानी कि ये 2-2 स्क्वायर्स आपने हर तरफ से छोड़ देने हैं। और ये जो दरमियान वाली स्पेस है, इस स्पेस की हम बात कर रहे हैं 6x6 की, इसको आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सा अल्फ़ाबेट कितनी हाइट पे या कितनी चौड़ाई पे लिखना है, हम उसकी बात करेंगे। ये जो हाइट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, ये तमाम अल्फ़ाबेट्स के लिए A to Z के लिए ये 6 स्क्वायर्स ही रहेगी, यानी आपका अल्फ़ाबेट जो है वो ये इसकी स्टार्टिंग लाइन है और ये एंडिंग लाइन है हाइट के लिहाज से। सॉरी, मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ। ये इसकी स्टार्टिंग लाइन है और ये एंडिंग लाइन है। तो हम जब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस लाइन को भी टच कर रहा होगा कोई भी अल्फ़ाबेट जब आप राइट डाउन करेंगे, और ये लास्ट वाली लाइन को भी टच कर रहा होगा। अब ये तो बात हो गई हाइट की, कि हाइट जो है वो हमारे पास सिमिलर है तमाम अल्फ़ाबेट्स के लिए। लेकिन जैसा कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जब हम गोथिक लेटरिंग कर रहे हैं तो ये ऐसी लेटरिंग है जिसमें मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स की चौड़ाई जो है वो मुख्तलिफ होती है, उनकी स्पेस मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने कौन से अल्फ़ाबेट्स के लिए कितनी चौड़ाई रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स. So here we write down the width of letters, that is width of letters. So here we use some letters are there in a lettering which have 4.5 square of width, like alphabet A, alphabet O, alphabet Q, alphabet R, alphabet T, alphabet V. These are the letters which have the 4.5 square width. Here similarly 3.5 square we write down the letter J, and half square is alphabet I. Similarly alphabet W have the width of 6 squares. Alphabet M have the width of 5 squares, and except of that all alphabets, all remaining alphabets have the width of 4 squares. So I am writing down here all remaining alphabets. Dear students, हमने ये कहा अभी कि जब हम इन अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं A, O, Q, R, T एंड V अल्फ़ाबेट्स, इनकी चौड़ाई 4.5 स्क्वायर होनी चाहिए। जो J है ये 3.5 स्क्वायर पे आएगा, I जो है वो हाफ स्क्वायर पे, W 6 स्क्वायर की चौड़ाई पे आएगा, M जो है वो 5 स्क्वायर की चौड़ाई पे आएगा। और इन अल्फ़ाबेट्स के अलावा जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं, रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं, उन सब के सब अल्फ़ाबेट्स की जो चौड़ाई है वो हमारे पास 4 होगी। और जो हाइट है वो हम पहली बात कर चुके हैं कि हाइट जो है वो तमाम अल्फ़ाबेट्स की जो है वो 6 ही रहेगी। तो अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कि हमने इसको किस तरह से लिखना है। फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट द अल्फ़ाबेट ए, लेट्स से लेफ्ट अल्फ़ाबेट ए, कि हमने इसको जब लिखना है तो हमने इसका एंगल कैसे लेना है, हाउ वी टोक द इंक्लिनेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज always before drawing or before lettering on a graph paper, draw the guidelines, starting guideline for width and ending guideline for width. Let's say first one alphabet is A, so always start the alphabet from that point, and here we see that A width is 4.5 square, so let's count it. Here's 1 square, 2 square, 3 square, 4 square and 4.5 square. So that's the point that I want to write the alphabet. So I start here and end the here. So it's a starting point, it's the end point. But if we write a vertical lettering last time, we have a same rectangle, straight rectangle, and we write down the alphabet A straight. But now we have to write down the inclined, because we are studying the inclined lettering and we use 67.5 degree inclination. So how we took that, let's see. Now I use the protractor for taking angle. That is a protractor. This student, look it carefully. That is a protractor. And on a protractor you see here a horizontal line. I will show you. See here, horizontal line,
and on that there is a inclined line, and that is intersecting point. That is the center point of protector. That is the center point of protector, and you see here are the different angles. So I put the set square, that intersecting point on a starting point. That is a starting point, and that is the intersecting point of protector. So I set down the set square or protector here, the horizontal line on a horizontal line, intersecting point on an intersecting point, vertical line on a vertical line. And now I count down the degree, that is 67.5 degree. So look it down there, 0 degree, 10, 20, 30, and we move on to here 60, then 61, 62, 63, 64, 65, 67, 67, and here I'm pointing the point which is 67.5 degree. So you see students how I use the set square. उर्दू में हम इसको एक दफ़ा बता देते हैं कि डियर स्टूडेंट्स ये सेट स्क्वायर है। इस सेट स्क्वायर की ओर आप देखेंगे कि ये आपको एक उफ़की लाइन नज़र आ रही है, एक अमूदी लाइन है, और ये उफ़की और अमूदी लाइन जहाँ पर मिल रही है ये इसका जो है वो सेंटर पॉइंट है। हमने ये देखना है कि ये जिस पॉइंट से हमने लेटरिंग स्टार्ट करनी है, इस पॉइंट को हमने बिल्कुल इसकी लाइन के ऊपर रखना है कि उफ़की लाइन के ऊपर आ रही हो, अमूदी लाइन के ऊपर आ रही हो, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा हो। और यहाँ से हम डिग्री देखेंगे कि ये 0 डिग्री है, ये 10 है, 20 है, और ये काउंट करके हम देखेंगे ये 60, फिर एक लाइन 1 डिग्री को ज़ाहिर कर रही है। तो हम यहाँ पे 67 एंड 68 के दरमियान एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे जो ये शो करेगा कि ये जो आपके पास प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट है ये 67.5 डिग्री पर है। तो अब ये एंगल हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि हमने हमारे जो अल्फाज हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमने लिखने हैं वो हमने इस डिग्री पर लिखने हैं। Okay dear students, now we draw the guideline. I am pointing the scale or something. That's a point of 67 degree. That's the starting point, that's the ending point, and I set the square RST rule here to draw that point. You see I'm drawing that point, and that is the guideline. That is the guideline I draw here. You will see that I draw that guideline on that position. Okay, be careful and see again. The width of alphabet A is 4.5 square, so we draw a guideline here. I'm talking that 4.5, 1, 2 square, 3 square, sorry, 1, 2, 3, 4, and 4.5. Okay, and that's the starting point, that's the end point. Now we talk about here. That's a starting point now. In vertical lettering, that's starting point, but in inclination, that is the starting point. After leaving 1, 2, 2.5 square near about. We talk about 67.5 degrees, so we leave out the 1, 2, and 2.5 square. Now we have to take that distance from that position. That width is 4.5, so here should be 4.5. So talk about that's half. 1, 2, 3, 4. That's the point. That width is 4.5, and that width is also 4.5. So I'm drawing here the next guideline. That's the starting guideline, and that's the ending guideline. Okay. Now you see, I write down here A's width should be 4.5 square. So 4.5 from here, 4.5 from here at an angle of 67.5 degree, and write down the alphabet A from here as I instructed before that it should be a single stroke. So look at the carefully. I'm drawing alphabet A. I'm starting from here. That's alphabet A. स्टूडेंट्स उर्दू में मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि हमने क्या किया कि हमने एक गाइडलाइन लेनी है, और ये गाइडलाइन हमने लेनी थी, हमने बात की थी 67.5 डिग्री पे। तो ये हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रा की। अब हमने जैसे देखा कि इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 स्क्वायर होनी चाहिए, तो 4.5 स्क्वायर हमने यहाँ से निशान लगा लिया, और इसी तरह से हम 4.5 का निशान यहाँ पर लगाएंगे, और हम ये गाइडलाइन जो है वो रहनुमाई के लिए लाइन लगा देंगे, एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर। और ये स्टूडेंट्स ये लाइन जब आपने ड्रा कर लेनी है
तो लेटरिंग मुकम्मल करने के बाद भी इस लाइन को आपने, इन लाइंस को यहीं पर रहने देना है, इनको मिटाना नहीं है। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट ड्रा हो गया, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जिसको हम कह रहे हैं कि ये अल्फ़ाबेट ए है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आपने बाकी अल्फ़ाबेट्स भी जो है वो उसी तरह से ड्रा करते जाने हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन आ रही थी वो क्या आ रही थी, अब इसको ग्राफ पेपर पे शो कर रहा हूँ, दैट इज़ 6/6, and we shown here that 67.5 degree is at the distance from that point is to 2.5. so dear students, ये 2.5 स्क्वायर ये शो कर रहा है। ये चूंकि तमाम का तमाम ग्राफ पेपर एक जैसी रेशियो में है, एक जैसी विथ में है, स्क्वायर पोजीशन में है, तो जब भी आप 67.5 डिग्री लेंगे तो ये हमेशा इस पॉइंट से 2.5 स्क्वायर के फासले पर ही आएगा। तो बजाय इसके कि हम बार बार इसको काउंट करेंगे, हम इसको, अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड ग्राफ पेपर है जिसमें तमाम विड्थ एंड हाइट्स इक्वल हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 4.5 2.5 पे आया है, तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से निशान लगा लेंगे, बजाय इसके कि हम बार बार हर अल्फ़ाबेट के लिए इसको मेजर करें। 1 2 2.5 स्क्वायर, तो ये हम 2.5 स्क्वायर जो है वो गाइड के तौर पर ले लेंगे। सिमिलरली आपने जब अल्फ़ाबेट बी लिखना है तो अल्फ़ाबेट बी के लिए यहाँ पर आप गाइडलाइन ड्रा कर लेंगे। अल्फ़ाबेट बी इस लिस्ट में अगर हम देखेंगे तो ये 4 स्क्वायर्स पे आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, एज वी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्फ़ाबेट बी, तो बी इज ऑल रिमेनिंग अल्फ़ाबेट दैट इट शोज दैट इज विथ शुड बी 4 स्क्वायर्स। सो नाउ वी टेक 4 स्क्वायर्स, 1 2 3 and 4 square. 4 square from here and 4 square from here, that is of 1 2 3 and 4 square. And we draw the guideline here again, the starting guideline and then the ending guideline. Students, look at carefully. Now we are drawing the alphabet B, and we write down, we draw the alphabet B here. I draw it with a pen, that you look carefully. I'm talking about the alphabet B, that is alphabet B. See carefully that I'm talking about the alphabet B, as it is in single lettering, but it touches the starting line, it touches the end guideline, it touches the bottom guideline, and it touches the top guideline. The alphabet should be in a proper space, that it touches the all lines, bottom line, top line, start guideline and end guideline. So dear students, practice that all lettering, write down that all alphabets in a proper positions, in a proper width that as instructed in your sheet, and be careful. One more point I draw it here, that you should, I hope you will understand my point, why I'm saying this, because when we talk about that alphabets O Q, that they are circular positions, so try to draw them on a circular positions. Dear students, जैसे मैंने पहले का बताया बी का, कि बी क्या था, कि बी को आपने देखना है कि बी प्रॉपर राउंड शेप में आना चाहिए, बैलेंस में आना चाहिए, इसका अपर पोर्शन लोअर पोर्शन सेम हाइट में होना चाहिए, और ये स्टार्टिंग लाइन को, एंड लाइन को, नीचे वाली लाइन को, ऊपर लाइन को, तमाम लाइंस को प्रॉपरली टच कर रहा है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ओ और क्यू, ये चूंकि सर्कुलर शेप में होते हैं, गोलाई की शेप में होते हैं, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनको हमने किस तरह से ड्रा करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर लुक एट डाउन द पोजीशन O and Q, 1 2 and a half, that is 67, that angle is 67.5 degree or 67.5 degree. So we draw the guideline, starting guideline here, as we know that O have the width of 4.5 square, so take 4.5 squares here, 1 2 3 4 4.5 squares, that point, and from that 1 2 3 and 4.5 square. So we draw here again the guideline, the starting guideline and end guideline, and we draw the alphabet O here.
So look at the position. I'm talking about the alphabet A. Alphabet A should be in a circular position by touching the all lines. Look at the O position. O is in circular from here. O is circular from here. It touches the bottom line. It touches the top line. It touches the starting point, and also it touches the end point. तो डी स्टूडेंट्स देखा आपने कि जब हम अल्फ़ाबेट ओ ड्रा कर रहे हैं तो ये पहली लाइन को भी टच कर रहा है, दूसरी को भी, यहाँ पे बॉटम लाइन को भी और टॉप लाइन को भी। तो डी स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो आज का प्रैक्टिकल है। इसको आपने जो है वो ड्राइंग ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो आपने प्रॉपरली जो है वो ड्रा करना है और ड्रा करके आपने जो है वो इसको सबमिट करवाना है। तो डी स्टूडेंट्स एट द एंड अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर को एक दफ़ा हम रिपीट करेंगे कि जब आप ये ग्राफ पेपर बनाएंगे प्रॉपरली तो आपने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं और किस तरतीब से आपने चलना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ फिक्स द ग्राफ पेपर, कि ग्राफ पेपर को आपने किसी टेबल के ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप की मदद से फिक्स कर देना है ताकि आप सही और दुरुस्त एंगल पर काम कर सकें। सेकेंड स्टेप इज़ ड्रॉ बॉर्डर लाइंस। ड्रॉ बॉर्डर लाइंस हैं कि यहाँ पर आपने ग्राफ पेपर जब लिया है तो ग्राफ पेपर के ऊपर यहाँ पे आपने साइड से 1 कंप्लीट स्क्वायर, एक तरफ से 1 कंप्लीट स्क्वायर, दूसरी तरफ से ये आपने लीव आउट कर देना है और ये आपने बॉर्डर लाइंस जो हैं वो ड्रा कर देनी है। The third point is make a lines for title, drawing number, etc. Listen it carefully, dear students. When we are talking about the titles, when we are talking about the drawing number, etc., as we practiced out in the previous sheet, I revised it that. Now listen it carefully. Here we leave out, we have a border line let. Here we also have a border line. Then that first square, you have also a border line for title. And what the title of our sheet is? And the title of our sheet is single stroke capital inclined lettering. Write down here with the pen, single stroke capital inclined lettering. So that's the title, and the drawing number, sheet number, etc. As we talk about that, come here at the bottom, that's the border line, and up to the border line draw a square. Here you write down your name. Here you write down your college roll number, and here you write down your class like MTB session 2021, and at the last here you draw the sheet number or practical number. So we write down here practical number 2. तो डी स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि ऊपर हमने जो है वो ड्राइंग शीट जो ग्राफ पेपर जो हमने बनाया उसका हमने नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने किया सिंगल स्ट्रोक कैपिटल इंक्लाइन लेटरिंग। सिमिलरली जब आप बॉटम पे आएंगे तो ये जो बॉर्डर लाइन आपने ड्रा की थी, बॉर्डर से ऊपर जो एक मुकम्मल स्क्वायर है, यहाँ पे आपने पेन के साथ यहाँ पे अपने पेन यूज़ करना है लेटर्स के लिए, बॉर्डर के लिए, और यहाँ पर स्टूडेंट का मुकम्मल नेम, यहाँ पे आपने अपना कॉलेज रोल नंबर दर्ज करना है, उसके बाद आपने अपनी क्लास और सेशन मेंशन करना है, और यहाँ पर आपने बताना है प्रैक्टिकल नंबर 2। और डी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 2 के साथ ही यहाँ पे आपने डेट मेंशन कर देनी है कि जिस डेट को आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है वो डेट यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे प्रैक्टिकल नंबर 2 के साथ। तो डी स्टूडेंट्स दैट्स द पॉइंट नंबर 3. आफ्टर दैट draw inclined guidelines, as we practice here that there are 2 points, draw inclined lines and construct alphabet letters. तो 4 and 5 पॉइंट्स यहाँ पर हमने प्रैक्टिस की है अभी कि आपने जो दी गई अदायात हैं, जो दी गई रेशो है, इस रेशो के मुताबिक आपने चलना है। आपने जो है वो गाइडलाइंस ड्रा करनी है, स्टार्टिंग गाइडलाइन, एंड वाली गाइडलाइन, और उसके दरमियान जो है वो कही गई जो चौड़ाई है और जो हाइट है उसके मुताबिक अल्फ़ाबेट को कंस्ट्रक्ट कर देना है, राइट डाउन कर देना है आपने। सो डियर स्टूडेंट्स
Move on to the last step, the sixth step. After completing the sheet, submit it to your instructors. तो ये आपने मुकम्मल करनी है शीट डियर स्टूडेंट्स, और मुकम्मल करने के बाद इस शीट को आपने मुतल्लिका इंस्ट्रक्टर को जो है वो सबमिट करवा देना है। आपने ये शीट जो है वो वापस जो है वो जमा करवा देनी है। तो ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन यू आर अनएबल टू कम टू योर कॉलेज एंड सबमिट द शीट, so draw it at your home, practice it, and after completion, uh, take its photos, or scan it, that graph sheet, and in PDF you submit via Google, Gmail or WhatsApp to your instructors. डियर स्टूडेंट्स, शीट मुकम्मल करने के बाद आपने इस शीट को जो है वो इसका PDF में लेना है, इसका फ़ोटो लेना है आपने, और उसको व्हाट्सएप के थ्रू, जीमेल के थ्रू जो है वो अपने मुतल्लिका इंस्ट्रक्टर को सबमिट करवा देनी है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड यू दैट हाउ टू ड्रा अ सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटरिंग। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिकल था। डियर स्टूडेंट, इसको मुकम्मल करें। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आए, जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत हो, तो आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू, जीमेल के थ्रू जो है वो आप राब्ता करके मुकम्मल जो है वो इंस्ट्रक्शंस लें, और इन इंस्ट्रक्शंस के साथ आप इसको कंप्लीट करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद नेक्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स।